Good morning, student. Myself, your English teacher Pradeep Palaka. Here I am teaching you your subject English. So, dear student, before I have sent you one NCERT Class 6 English book PDF format. It is from your e-class Honeysuckle. You can download from there and you can see that book from your e-class apps. So student, today I am going to teach you your English uh, from the Honeysuckle NCERT book, the lesson 1. So student, you make ready your pen and paper and point out all the important points and write down all the doubts, and then you can ask a question and you can learn easily. So without wasting time, let us begin our class. Dear student, let us begin our class. Student, we are going to learn the subject English. So it is your English book content. So here you can see different type of different lessons with page number. Student, today we are going to learn this first lesson here. Who did Patrick's homework? Okay student, let us learn from this content the lesson number 1, who did Patrick's homework. Okay student, we will learn who did Patrick's homework. So let us begin our lesson, who did Patrick's homework. So this is your first lesson student. So before I start teaching, I want to tell you some important notes. Please note down. Student, language we are learning. We are learning English language, the most important language. So before we read or we learn any lesson, we must know how to read the English. We must know how to read. And while we are reading, dear student, we will face different difficult vocabularies, different hard words. So you have to underline these words, you have to note down these words if you are not understanding, and you can get help from your dictionary and you write it down in our own Odia language, the meaning. It will be helpful for us. So student, the important thing is we have to understand the language, we have to know the language. It is not that we have to means by heart or memorize. It is not like that. We have to understand it clearly. So try to understand, try to learn, try to read properly and try to write properly in your English classes. So student, let us begin our first chapter, who did Patrick's homework. Okay, so it is Patrick is a boy. He is a student like you. He is also studying in standard 6. So he is a he is a boy who is suffering to do his homework. Student, I want to ask a question. Are you getting homework during your classes? So obviously the answer will be yes. So what type of homework you get? Can you think? And how you do those homeworks? Okay, your teachers are teaching in the classroom. Then they are asking, they are teaching, they are asking you to write homework or to do homework. So my question is, student, do you like those homeworks?
obviously the student those who are doing means hard work, those who are keeping interest in work, who is very serious about their task, so definitely they will feel happy or they will feel good to do these works. But those students who are not means giving interest for study, and if they get lot of homeworks, then they will not be happy. Okay, so student ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଚର ମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ାନ୍ତି ଆଉ ପଢ଼େଇଲା ପରେ ସେମାନେ ହୋମ୍ ଟାସ୍କ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ସେ ହୋମୱାର୍କ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କର? ତ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ଲେବର କରନ୍ତି ବା ପଢ଼ାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ହଁ କହିବେ, ୟେସ୍ ସାର୍ ଅର୍ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ଆମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଏ ହୋମୱାର୍କ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବା ଖାଲି ସାଙ୍ଗସାଥି ରହିବା ପାଇଁ ବା ଖାଲି କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖିକି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ହୋମୱାର୍କକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଉଥିବେ, ଏ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିବେ। ସୋ ଏଠି ପେଟ୍ରିକ୍, ଓକେ, ପେଟ୍ରିକ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟର, ହଁ, ସେ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଲଗଭଗ 35 ଡେଜ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ 35 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ହୋମୱାର୍କଟା ମିଳିଛି। ଆଉ ସେ ବହୁତ ୱାରିଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହୋମୱାର୍କ କେମିତି ହେବ, କିଏ ହେଲ୍ପ କରିବ, ସେ କେମିତି କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ହୋମୱାର୍କଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏ ଷ୍ଟୋରିରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମତଲବ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ମିରାକଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପେଟ୍ରିକ୍ ହ୍ୟାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହିଜ୍ ହୋମୱାର୍କ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲି, ଟ୍ରେମଣ୍ଡସଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିକି ସେ ହୋମୱାର୍କଟା କରିସାରିଲା, ପୁଣି ସେ ଏ ଗ୍ରେଡ଼୍ଟା ପାଇଲା। ବୁଝିଲ? ହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ହୋମୱାର୍କ ସେ କିପରି, ସେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ହି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍, ହାଉ ହି ହାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହିଜ୍ ହୋମୱାର୍କ, ସେ କେମିତି ତା'ର ହୋମୱାର୍କଟାକୁ ସେ କରି ସାରିଛି, ଆଉ କେମିତି ସେ ଏ ଗ୍ରେଡ଼୍ଟା ପାଇଲା। ହଁ, ଏ ଗ୍ରେଡ଼୍ ସେ ହାଉ ହି ଗଟ୍ ଏସ୍ from his means this great task, his semester homework. So let us read and understand. So ଆସ ଆମେ ଆକୁ ପଢ଼ିବା, ଏ ଷ୍ଟୋରିଟା ପଢ଼ିବା ଆଉ ଆମେ ଶିଖିବା। ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। So let us begin our class. Let us begin our this first lesson. Who did Patrick's homework? So student, here we see, let us try to read. ଆସ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ପଢ଼ିବାଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁନି, ସେ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ନୋଟ୍ କରିବ, ଡିକ୍ସନାରୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ଲେଖିବ। ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଆମର ଏଠି ଲେସନ୍ରେ, ଏଠି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ବୁକ୍ରେ ଦେଖିଛୁ, ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଲେଟ୍ ଅସ୍ read our lesson. So student, let us begin. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's sure sometime he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. So student, এটি দেখো, Nintendo means a video game. Ignoramus means an ignorant person who lacks education. ମାନେ ଗୋଟେ ଅବହେଳା ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ କି ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ର କମି ଅଛି ହେଲା। ନିଣ୍ଟେଣ୍ଡୋ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ଟା, ବୁଝିଲ? ତ ଦ ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ଟୁ ହିଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ it wasn't a
doll at all. ଦେଖୁଛ? It is not a doll at all, but a man of tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high, tall hat, much like a witch. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." Patrick could not believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, "Only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's." The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. "Oh, am I cursed? But I will do it." And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. Except there was one glitch. The elf did not always know what to do and he needed help. Help me, he would say. And Patrick would have to help in whatever way. "I don't know this word," the elf spoke while reading Patrick's homework. "Get me a dictionary." "No, what's even better? Look up the word and sound it out by each letter." When it came to maths, Patrick was out of luck. "What are times table?" the elf shrieked. "We elves never need that." "And addition and subtraction and division and fraction. Here, sit down beside me. You simply must guide me." Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. "Go to the library. I need books. More and more books. And you can help me read them too." As a matter of fact, every day, in every way, the little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly and slowly slipped out the back door. Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. You see, in the end, Patrick still thought he'd made the tiny man do all his homework. But I'll say a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. So, student, it is the story of who did Patrick's homework. Okay. So, student, in this lesson, you see, I hope you are you came to know something, some secret. It is very interesting. Okay. So I want to explain, student, one by one paragraph. Okay, I will tell you in Odia also. Student, आमे इंग्लिश को रीड कलु
हाँ एमती रीडिंग प्रैक्टिस करिबो मु आगुरु मध्य क्लास रे कहूଥିଲି दिनकू एटलिस्ट हाफ एन आवर हाँ इंग्लिश रीड करो लाउडली हाँ बस इंग्लिश बहीटी धर आ ताको लाउडली रीड करो आ जति प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट हबो भूल हेले किछ असुविधा नाही ठीक अछि स्टूडेंट भूल हेले वी विल मीन्स रेक्टिफाई इट आमे ताको रेक्टिफाई करिबा ताको आमे ठीक करिबा किंतु आमे जतबे पर्यंत लाउडली हाँ वी हैव टू रीड अलाउड आमे मुँह खोली आवाज न करी पढ़िले आमे केबेले प्रोनाउंसिएशन करि पारिबा नाही तो एमिति रीडिंग प्रैक्टिस करिबो सो नाउ कम टू द पॉइंट एबे आमे पॉइंट को आसीबा आमे पाठटी को पढ़िबा एट देखो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क too boring he said he played hockey see look here how he is holding hockey stick he is really fond of hockey perhaps okay so let's come back Patrick never did homework too boring he said homework कौन सब बेले homework कौन एटा बहुत boring जिनस he played hockey and basketball and Nintendo instead his teacher told him Patrick do your homework or you won't learn a thing देख से कौन करथिला हॉकी खेलुथिला न बास्केटबॉल न निंटेडो मीन्स वीडियो गेम हाँ मोबाइल रे जेमती कि आमर सबू स्टूडेंट माने मोबाइल मिलले आमे ऑनलाइन कौन पढ़ुछु के जानी हाँ वीडियो गेम धरी खेलुछु हैला हाँ वीडियो गेम बेसी खेलबनी ठीक अच्छे देख ये लर्न कर हाँ देख ये टीचर कहते पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वांट लर्न ए थिंग पैट्रिक तुम होमवर्क कर न तुम किसी शिखी पारिबनी एंड इट्स ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस हाँ इग्नोरेमस मतलब ए राइट साइड देख ये इग्नोरेमस मीनिंग दिया जाए इग्नोरेमस एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन देख लो जा पाखे कि एजुकेशन बहुत कमी अच्छी आकु लोक कौन करती इग्नोरेंट करती हाँ अवहेला करती देख जो आम जो क्लास रे भल पढ़ू आमको समस्ते साबास करती जदि आम होमवर्क करवानी जदि आम भल पढ़ानी बा आम जहाँ होमवर्क करवानी तेबे डेफिनेटली टीचर अपसेट हेबे हाँ पिला को आमर क्लासमेट को सामना रे आमको कौन करिया पड़िबो समस्ते इग्नोर करिवे पेरेंट्स मध्य खुशी हेबेनी हाँ से माने केते कष्ट पड़ी आम मान को पाई केते सुंदर स्कूल प्रोवाइड करूछंती बुक्स किणुछंती सबु जिनिस आमर प्रोवाइड करूछंती किंतु आमे पढ़िबानी देखो पीटर को तांको टीचर माने सजेशन दउछंती डू योर होमवर्क अदरवाइज यू वोंट लर्न ए थिंग देखो होमवर्क करबनी जदि एमती वीडियो देखिबनी आमे कौन पढ़ौचु निजर टीचर कौन पढ़ौछंती केमती आमे शिखि पारिबा तो इग्नोरेंट हो जिबा जेमतिले हाँ सो बट व्हाट कुड ही डू ही हेटेड होमवर्क सो स्टूडेंट व्हाट ही कुड से कौन करिवो तार तो इंटरेस्ट अच्छी हॉकी रे से तो होमवर्क पूरा घुणा करे देन वन डे he found his cat playing the cat playing with a little doll and he grabbed it away to his surprise it wasn't a doll देखो ये बढ़िया ये देखो कैटा डोल तार डोल खेलुची किंतु डोलटा डोल नहीं इट इज नॉट ए doll at all but a man of tiniest size he had a little wool shirt with old fashioned breeches had a high tall hat much like a witch he yelled save me don't give me back to that cat I'll grant you a wish I promise you that देखुच ए केट पाखरे जो डोल भाया देखुच स्टूडेंट एटा प्रकृत में गोटे डोल नहीं पैट्रिक को एटा डोल बोली भाभी किंतु एटा गोटे बहुत टाइनीएस्ट माने टाइनी माने अति छोट बहुत छोट गोटे जीवटी माने गोटे मनीषटी आउरी से देख केमती वुलन क्लॉथ पिंची तांकर आउ हेड देखुच केमती से ओल्ड फैशन आउ गोटे
which word it देखो breeches माने breeches or short trousers. The writer here spells it for fun to rhyme with the word which. A which ଆଉ a breech ଟା से କ'ଣ କରିଛି ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା से ताकू राइमिंग करिछि हाँ फैशन ब्रिचेस मच लाइक ए विचेस. सो एटा गोटे सर्ट ट्राउजर. ओके सो स्टूडेंट से कौन करुच्ची से टाइनी मैन से कौन करुच्ची सेव मी डोंट गिव मी बैक टू दैट केट मते बचाओ से केट पाख मते दियोनी. हाँ आई विल ग्रांट यू ए विश आई प्रॉमिस यू दैट तुम जहाँ चाहिए तुम जहाँ इच्छा कर मु ताहा करी मोर यह प्रतिज्ञा मु प्रॉमिस करुच्ची बोलिकी से टाइनियस्ट मैन कहला. But Patrick could not believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problem. ଏବେ କ'ଣ पेट्रिक को विश्वास मत लगुनि जे तार जो प्रोब्लेम रही होमवर्क करवा प्रोब्लेम एबे तो ता पाखरे आंसर मिलगला. हाँ देख केते माने हाउ ही क्लेवरली थिंक. सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माय होमवर्क. देख ओनली if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job I could even get a. हाँ मु तो बंचेबी से केट को देविनी किंतु जदि तुम ए मोर सेमिस्टर जो 35 दिन अच्छी मो पाखे रहिबो आ मोर होमवर्क को कंप्लीट करदेब मु जमती कि ए ग्रेडटा पाइबी तेबे जाइकी मु डेफिनेटली छाड़देवी. So the little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. देखो dishcloth meaning देखो student dishcloth माने a cloth used for washing dishes. Okay ताकू कहबे dishcloth. so आमे dishcloth दो डिश मान को आमे सफा करता से छोट छोट कपड़ा केमती थाए रिंकल है कि मारता है कि गोटे चेपुटा है कि पाखरे पड़ी था. हाम्पर माने ए बास्केट विथ ए लीड. हाँ गोटे बास्केट टी जोटी की विथ ए लीड. तो ग्रिम्स्ड स्काउल्ड पर्स्ड हिज लीव माने हिज फेस हैड दिस एक्सप्रेशन. ता मुँह को से एमती बुलाऊँच माने रागरे से पार्टी को मुड़ुची बा निजर एक्सप्रेशन को देखौची गोटे निजको से कौन कर प्रेजेंटेशन करे ये कामटा ता द्वारा हो न पारला भाया किंतु कौन कर. ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल हिज फिस्ट एंड ग्रिम्स एंड स्काउल्ड एंड पर्स हिज लिप्स. ओ एम आई गॉड्स बट आई विल डू इट. हाँ स्टूडेंट लास्ट रे से कहूँ हाँ मु करी मु डेफिनेटली करी. तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन. एंड ट्रू टू हिज वर्ड that little elf began to do Patrick's homework. हैला प्रॉमिस तो देइछि ना आ पैट्रिक ताकू बंचेछि से केट हाबुडरू. सो एठी देखिबा पैट्रिक रो होमवर्क को से एल्फटा करबा आरंभ कर देला. एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच. ग्लिच मीन्स एन इनफॉर्मल वर्ड और ए फॉल्ट इन ए machine that prevent it from working properly. Here hitch or problem. Okay so glitch means hitch or problem जोटा कि एटा गोटे मानस फंक्शन से लिटिल मैन जो लिटिल एल्फ पाए. ओके नाउ द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प मी ही वुड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाट एवर वे. देखो एठी एल्फटा से किसी बुझी पार नथिबो से किसी जानी पार नथिले सब बळे से हेल्प मी से चिल्लौची आउ चिल्लैकी बोले पैट्रिक आ किसी उपाय ना ना ता होमवर्क कंप्लीट होबार अछि से जहा कहले ताहा से हेल्प करछि. नाउ आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वेक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. गेट मी ए डिक्शनरी. नो व्हाट्स इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. एट देखो कौन हो एल्फ को केतटा वर्ड से बुझी पारनी. से कहूँ चिल्लौची पैट्रिक को डिक्शनरी आनो छेड़ा देखो एड़ा देखो. हाँ से वर्ड को पढ़ो एटा पढ़ो आवाज करो. सो व्हेन इट केम टू मैथ मैथ बारी आसला पैट्रिक वाज आउट ऑफ लव. व्हाट आर टाइम टेबल. द एल्फ श्रिक्ड. श्रिक मीन्स
या देख गेव ए शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई हाँ से पूरा चिल्लाऊँ मैं टाइम टेबल हाँ नहीं कौन टाइम टेबल कौन वी एल्प्स नेवर डिड दैट हमको टाइम टेबल कौन बाबू केवल टाइम टेबल ही नहीं है देखो कौन कौन एडिशन सब्सट्रैक्शन डिविजन एंड फ्रैक्शन आम एल्प्स गुड़ाक एसबूर किसी आवश्यक ना ओके हियर सिट डाउन बिसाइड मी यू सिंपली मस्ट गाइड मी एल्प्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री टू देम इट्स ए मिस्ट्री एबे देखो से मैथटा कौन होची ता पाखरे बस बोलची आ से करूची पैट्रिक्स तो करूची हेल्प करूची जहाँ किसी एल्प्सर डिमांड एबे देखो एल्प्स तो आम ह्यूमन हिस्ट्री विषय किसी जाननी आउ एटा हिस्ट्रीटा गोटे मिस्ट्री भाया का हाँ एटा गोटे मिस्ट्री सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए साउटर जस्ट गॉट लाउडर go to the library I need books more and more books and you can help me read them too एटी देखुच एल्प्स कौच से बही आण ए बही आण पार्टी करुच्ची जोर शीघ्र आण कौच लाइब्रेरी जाओ से बही दरकार मोर ए बही दरकार आउ दरकार एडा दरकार सेडा दरकार हाँ यू हेल्प मी हाँ रीड इट सबू बेले जाइए पैट्रिक को पूरा काम लगे ओके एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए nag माने one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something okay जोड़ा कि आम कौन बोलचु कंप्लेन बॉक्स आम कही था ना पिला सब बेले आसिक से कौन एडा कर बोलिकी से खाली प्रॉब्लम ही क्रिएट करुथिबो आउ एठी सेमतिका एल्फ चली काम पैट्रिक को से सब बेले एडा कर से पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट ए ड्रैग अब देखो ड्रैग मीन्स एन इनफॉर्मल वर्ड ओके समथिंग डल और अनइंटरेस्टिंग एट तो पैट्रिक को हार्ड वर्क करा पड़े हाँ इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग इट इज़ ए ड्रैग ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स ओहो and never felt so weary was going to school with his eyes puffed and bleary आखि पड़ जाउथिबो निद आसुथिबो राति सारा हार्ड वर्क करुची आ स्कूल जाउची फाइनली देखो एठी फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो तांको सेमेस्टर दिन सरी गला एल्फटा फ्री हैला से एथर से जाई पारिबो एज फॉर होमवर्क एबे होमवर्क विषय कौन अच्छी देयर वाज नो मोर आओ किछि ना सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर हाँ घर पचकान धीरे से खसी गला स्लीली मन सिक्रेटिवली हाँ धीरे चुपचाप के भाग गया ओके सो स्टूडेंट अबे स्कूल दिन पड़ा आसला सेमिस्टर सरीगला आउ एल्फटा जीव फ्री हो गला पढ़ेला एबे देखो होमवर्क सर जाइए सब ठीक ठाक गला पैट्रिक गॉट हिज एज हाँ फाइनली पैट्रिक कौन कला से तार ए ग्रेडटा हासिल कला ता होमवर्क रे असाइनमेंट रे हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड समस्त पूरा चकित हिज टीचर स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्राइज टीचर माने बहुत खुशी हो गले समस्ते प्रेज कले मान प्रशंसा कले हाँ एंड हिज पेरेंट आउ तो बाबा आम जो ए ग्रेड पाइबा आमको जो टीचर बढ़िया स्टूडेंट गुड बॉय कहे गुड गर्ल कहे समस्ते जदि वा वा कहे तो डेफिनेटली आमर पेरेंट्स माने प्राउड फील करेंगे आमपाई से गर्व डेफिनेटली फील करेंगे ये देख पैट्रिक्स पेरेंट्स बहुत खुशी अच्छा दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक से तो पूरा छानिया हो गले कि ए पैट्रिक को कौन हो गला ही वॉज नाउ द मॉडल किड मतलब ए चाइल्ड ओके ही वॉज नाउ ए मॉडल किड किए पैट्रिक मॉडल किड बनीगला क्लीन हिज रूम वाओ एटा तो गोटे बढ़िया पॉइंट स्टूडेंट तार रूम को पूरा साफ सुथरा रखुचे हाँ एटा तो बहुत बढ़िया कमाल की काम नहीं कि तुम्हें समस्ते निज निज रूम सफा रख ना सफा रखाटा बहुत भल निज रूम निज क्लास रूम
ନିଜର ଯୋଉଠି ଆମେ ରହୁଛୁ ସରାଉଣ୍ଡିଂ। ଆଉ ଡିଡ୍ ଇଜ୍ କୋର୍ସ, କୋର୍ସ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଖ ୱାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଡନ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ ଅଫେନ୍ ବୋରିଂ। ଏଇଟା ତ ବୋରିଂ ନାଇଁ କି ଅଫେନ୍, କିନ୍ତୁ ୱାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଡନ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ। କୋର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ କାମଟା ସବୁଦିନ ଆମେ କରୁ। ୱାଜ୍ ଚିୟରଫୁଲ୍, ସେ ବହୁତ ଖୁସି। ହଁ, ନେଭର ରୁଡ୍, ସେ କେବେ ହେଲେ କାହା ସହିତ ରୁଡ୍ ହେଇନି, rude behave करेनी। हाँ, like he had developed a whole new attitude। attitude माने student a feeling about someone or something। okay, a feeling about someone or something। so here Patrick's attitude is a very new attitude, a wonderful attitude। so lastly student, you see in the end Patrick still thought he'd made that tiny man do all his homework। लेठी पैट्रिक कौन भावुची स्टूडेंट, से भावुची से जो छोट लोकटा टाइनी मैनटा थिला, से जाकू कि गेट्रु सामनारू बंचे थिला, से ही ये सब होमवर्क करिछि बोलिकी पैट्रिक भावुची। समस्ते सरप्राइज होचंती। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, मु तुम गोटे सीक्रेट कहूँ, शुण शुण शुण, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। हाँ, एटा तुम मो पाखे रहीबार अच्छी। कौन सीटा, इट वाजंट द एल्फ है, से टाइनी मैनटा ये माने पैट्रिक्स होमवर्क करनी। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। जानिल स्टूडेंट, सब काम पैट्रिक ही करिछि। आ पैट्रिक लगुच से तार टाइनी मैन द्वारा करे, किंतु ना ना स्टूडेंट, टाइनी मैन बहुत चालाक, से पूरा कामटी पैट्रिक द्वारा करे। देखो सो पैट्रिक पूरा माने हार्ड वर्कर बनी जाइए, केते सुंदर वंडरफुल न्यू एटीट्यूड किड बन जाइए। हाँ, मॉडल किड बनी जाइए। पेरेंट्स तो पूरा सरप्राइज, टीचर पूरा खुशी, समस्ते बुआ बुआ प्रेज करुँच, क्लासमेट पूरा छानी जाइए। एटा पैट्रिक निजे ही जो कि दिन रात सोन थिला, आउ से हार्ड लेबर करूला, आउ होमवर्क को से बेस्ट टू बेस्ट कला, से ए ग्रेड पाई। एटा पैट्रिक ही ता वर्क से करिछि। देखिल स्टूडेंट, होमवर्क करने द्वारा आ निज पाठ निज वर्क को मन ध्यान करने द्वारा केते गुड़ाए बेनिफिट हो, आम निजक गर्वित करूँ। आम पेरेंट्स मान को वी मेक फील प्राउड टू आवर पेरेंट्स। हाँ, आवर ऑल पीपुल, they will praise us, our teacher will bless us, they will praise us, huh? And it will be liked by everybody। so student, like Patrick, okay, he might be thinking, से भाबुथिला से हेल्पटा कला बोले, किंतु ये हेल्प करनी। देखी तो से सबू जगार हेल्पटा पैट्रिक्स को से ड्राग माने ताकू से काम करे, एटा करो सेटा करो सेटा करो सेटा करो, दिन राति से करे। से खाली से हेल्पटा कौन जानबो। हाँ, आम मैथ विषय कौन जानबो, आमर ह्यूमन हिस्ट्री विषय कौन जानबो, साइंस कौन जानबो, से तो किसी जानवाटा ना, ताकू तो किसी जाना ना, एटा सब पैट्रिक कला। so who did Patrick's homework children, my dear student? it is Patrick had done it himself। देखिल, Patrick had done it himself। मो आको अंडरलाइन कर स्टूडेंट, आगे आको आम गोल बुलेला। Patrick had done it himself। so student, I hope you have learned this lesson and very wonderfully। and if you are feeling or finding any difficult word student, you then note it down, see dictionary and learn the word meaning। and I hope you understand this lesson। the lesson number 1 is who did Patrick's homework? Go student, our answer, who did Patrick homework? Patrick did his homework himself। wow, great job student। so let us now do our exercises। okay student। so student, now let us begin our exercises from our first lesson, who did Patrick's homework। so here answer the following question। okay student,
So the first question is, uh, what did Patrick think his cat was playing with? Okay, and another question is, what was it really? Okay, student. So the answer is, the first question's answer is, Patrick thought his cat was playing with a little doll. ଏଠି ଦେଖୁଛ ନା, Patrick thought his cat was playing with a little doll. So what was it really? But it was a man of the tiniest size, a little elf. Okay, student. ଏଠି ଆମେ tiniest size ପାଖରେ ଗୋଟେ କମାଟି ଦେଇଦେବା. ହଁ, okay. So now student, the second question. ଏଇଟା ବୁଝିଲ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ପେଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା ଯେ କେଟ୍ କାହା ସହିତ ଖେଳୁଛି ବୋଲି? ପେଟ୍ରିକ୍ ଭାବୁଥିଲା କେଟ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡୋଲ୍ ସହିତ ଖେଳୁଛି ବୋଲି. ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ରିଏଲି? ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କ'ଣ ଥିଲା? ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇନେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍, ଏ ଲିଟିଲ୍ ଏଲ୍ଫ. ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସୋ ବୁଝିଲ. ନାଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ଲିଟିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଏ ୱିଶ୍? ସେ ଛୋଟ ଏଲ୍ଫଟା, ସେ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ର ୱିଶ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କଲା? ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍, ଦ ଲିଟିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଏ ୱିଶ୍ instead a condition that to save him and not to giving back to that cat. Okay student, से कैट को देवनी, एटा बहुत डेंजर, मत नदेले ए कंडीशन रे मु पैट्रिक रो विश को पूर्ण करिया पय चाहूची बोली से प्रतिज्ञा करथिले. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक्स रो विश कौन थिला? आंसर देखो स्टूडेंट, पैट्रिक्स विश वाज टू डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर, दैट्स 35 days. ओके, से सेमिस्टर शेष भितर तार होमवर्कटा कंप्लीट हो जिबार अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, बुझी पारलो ना स्टोरी रु? देखो स्टोरी रु आम लेसन रु आमे क्वेश्चन आंसर करछु हैला. नंबर 4 क्वेश्चन स्टूडेंट, in what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? Okay, को सब्जेक्ट एटी कौन स्पेशली मोड लिख दीजिए. एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स ए मिस्ट्री, सो द लिटिल एल्फ नीडेड हेल्प. ओके, वॉट एवर इन ह्यूमन हिस्ट्रीज और इन दिस सब्जेक्ट, वॉट एवर ही नीड हेल्प, सो ही आस्क्ड टू डू Patrick, he asked to help. Okay, he asked the help from Patrick to say help Magila. Okay, question number 5, how did Patrick help him? Patrick ताको से केमते हेल्प कले? आंसर, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट Patrick help himself every day in every way. That little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up nights, had never felt so very. देखो Patrick से एक्चुअली Patrick तार काम से निजे करूथिला, एडी खाली एल्फटा खाली ऑर्डर दउथिला हला. एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वाज ए नाग. एटा पूरा बोरिंग थिला. Patrick was working harder than ever, से आगुठू अधिका काम करूथिला. इट वाज ए नाग. He was staying up nights and had never felt so worry. Okay. Question number 6. Who do you think did Patrick's homework? The little man or Patrick himself? Give reason for your answer. किए Patrick homework करथिला? Student, आम तो जानछि Patrick हैं. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. Patrick was now the model kid. क्या reason कौन? His model kid, clean his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had देखो head like the student had developed अलग अलग word. Okay, had developed a whole new attitude. Okay, he developed with a whole new attitude. Okay, so this is the reason, and he had done his homework and at last he got to grade A. So these are the
questions answer student. Now let us fill the blanks. Okay, here is a in this help box there is a word. Let us fill the blank. Some people find household days a bore, but I like to help at home. Some people find household chores a bore. Okay. Who stole the diamond is still a day's mystery. These days we are going to have a class exhibition. Semester. Days the elf began to help Patrick. True to his word, the elf began to help Patrick. Can you dash this word in the dictionary? Can you look up this word in the dictionary? I started early to be on time, but I was dashed. There was a traffic jam. It is out of luck. But I was out of luck. Then the last fill in the blank. She says she's got a lot of books, but I think most of them are borrowed. She says she got a lot of books, but between you and me, I think most of them are borrowed. So student, आपण मैंने समस्ते जिते जन देखुं व्यूअर्स माय डियर स्टूडेंट यहाँ हूँ क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स पुणी आपणकर ई बुक रे बा जो पीडीएफ इंग्लिश बुकटा आम देचु जोटा डाउनलोड करी अनेक गुड़ाए क्वेश्चन रही एक्टिविटी रही आम आमर रियल क्लास रे से गुड़ाक करवा आशा करे मु कि क्वेश्चन आंसर गुड़ाक बुझिला पुणी चैप्टर टी भल भाव बुझीगला सो स्टूडेंट आई विल टीच लाइक दिस यू विल गेट न्यू वीडियो तो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट यू सब्सक्राइब दिस चैनल आवर सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड डू योर होमवर्क्स and like Patrick, if you do hard work you will be praised. समस्ते तुमको सबस कहे प्रशंसा करेंगे. So have a wonderful life and have a good days ahead. Thank you. See you. Bye student.